डभोई वडोदरा रोड पर पलासवाड़ा निकट रेलवे ओवरब्रिज के लिए डाइवर्जन दिया गया था, लेकिन ये जो सड़क है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की परिस्थितियां खड़ी हो रही थी। खास तौर पर एम्बुलेंस यहां पर फंस जाती थी, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। इस मामले की जानकारी मिलते ही डभोई के जागरूक नागरिक और पत्रकार विवेक मेहता की ओर से डाइवर्जन को लेकर सड़क को चौड़ा करवाने के लिए 1 माह से विभिन्न विभागों के अधिकारियों और साथ ही विभिन्न विभागों में जाकर इस मामले की पेशकश की गई थी। तब आपको बता दें कि इस मामले के मद्देनजर इलाके के विधायक शैलेश भाई मेहता की ओर से भी संकलन बैठक और रेलवे विभाग को पेशकश की गई थी। तब आखिरकार ये समस्या सुलझ रही है। यहाँ पर सड़क को चौड़ा करने की कामगिरी शुरू करवाई गई है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं और इन सभी की ओर से पत्रकार और जागरूक नागरिक विवेक मेहता का धन्यवाद अदा किया गया है। और साथ ही विवेक मेहता की ओर से भी सभी अधिकारियों का और साथ ही राजनीतिक अग्रणियों का इस मामले के मद्देनजर धन्यवाद अदा किया जा रहा है। डभोई थी वडोदरा मार्ग पर आवेल पलासवाड़ा फाटक खाते जे डाइवर्जन रेलवे तंत्र द्वारा आपवामां आव्युं हतुं ए नानुं हतुं, जेना कारणे ट्राफिकनी समस्या हती। आ बाबते अमारा ध्याने वात आवता रेलवे अधिकारी श्री, कलेक्टर साहेब श्री सहितना अधिकारीश्रीओने अने विभागमां आपणे जाण करी हती અને દરેક અધિકારીને મળીને આપણે સમજાવતા હતા કે આ જે ટ્રાફિકની સમસ્યા છે દિવસે ને દિવસે વકરતી જાય છે અને આના કારણે એમ્બ્યુલન્સ અને તાત્કાલિક સેવાના જે દર્દીઓ છે એમને ખૂબ તકલીફ પડી રહી છે। આ બાબતે આપણી રજૂઆતો રંગ લાવી છે। સાથે સાથે વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા દ્વારા પણ એમની રીતે જે તે જગ્યાએ આની રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને રજૂઆતો રંગ લાવી છે। ગત રોજના દિવસે આ ડાયવર્ઝન પહોળું કરવામાં આવ્યું છે અને રેલવે તંત્ર દ્વારા જે કામગીરી કરવામાં આવી છે એ અભિનંદનને પાત્ર છે, કારણ કે લોકોને જ્યારે તકલીફ પડતી હોય ત્યારે ગમે એવું કામગીરી હોય એ કામગીરીને સુધારવી એ જ આપણું કામ છે એવું એમને પણ લાગ્યું અને એમને આ કામગીરી સુધારી છે। જે બાબતે અમે રેલવે તંત્રનો પણ આભાર માનીએ છીએ, કલેક્ટર સાહેબનો આભાર માનીએ છીએ અને સાથે સાથે વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે જેમના થકી, જેમના પ્રયાસો થકી, જેમની મદદ થકી આપણી આ જે રજૂઆત હતી એ રંગ લાવી છે।